is at its peak as poll gets underway in West Bengal. Altogether, 25 West Bengal constituencies spread over 2 districts, Cooch, Behar and East Midnapur, are under polls today. In all, 170 candidates, including 18 women, are contesting, trying to woo over 58 lakh voters. For the first time since independence, the residents of border enclaves in Cooch Behar district will be able to exercise their franchise thanks to the formal inclusion of the enclaves in the Indian territory last year. There are 9,776 voters in the enclave. Altogether, 6,774 polling stations have been set up where polling will be held till 6 in the evening. And let's get an update from our correspondents. Joining me at the moment is Anibrata from Nandigram. Anibrata, first of all, give us an update on how the voting turnout has been. It's been over an hour into the voting. We can see a huge queue of voters turning up, especially women voters. Yeah, Nancy, as you know, Nandigram holds the center stage of the political landscape of West Bengal because this center is the epicenter and synonymous with the Mamata Banerjee's anti-land movement, and that catapulted Trinamool Congress to power. And this time, as you see, that the large number of voters are in the line, both men and women, and also the first-timers we can see here. And you know, this Nandigram Trinamool Congress hold a large strength here, and we have seen in the 2011 election, Trinamool Congress backed all the 16 seats in East Midnapur district. So this time the Mamata Banerjee giving all weight to Nandigram because this is a very much, holds a landscape, political mileage to her because she is not ready to lose this seat, and it is because of this reason Mamata Banerjee changed the sitting MLA from this seat, and instead Mamata Banerjee his MP of Tomluk, Subhendu Adhikari, is in the fray. A seesaw battle is we are going to witness here in Nandigram. Nancy, all intensive security arrangement has been tightened because in the last 2 phases we have seen stray incidents of violence vitiated the poll climate to some extent. So election commission left no stone unturned to ensure free and fair poll in this phase. And it is for the first time in Bengal politics and in election time, the entire district is under 144. The prohibitory order clamped throughout the district. You can see that the central force are manning the booth. They are not only manning the booth, but at the same time, they have kept vigilance on the street, and restricted vehicles movement are taking place. Intensive checking is going on all around. So far we have had a peaceful election. So far we are getting news from different corners that peaceful election is being held. And Nancy, I want to say one thing. The election commission has made arrangement of wheelchairs for the elder voters, and the older voters, and around 4,000 wheelchairs have been arranged so that they do not face any difficulty to cast the vote. And this assistant brings the aged women here at the polling center, and soon after casting her vote, she is going away sitting in the wheelchair. This is a very striking arrangement we can see here in the Nandigram itself, and intensive arrangement has been taken by the election commission to ensure all arrangements so that free and fair poll being held here. Nancy. All right, Anibrata, thanks very much for joining us at the moment and sharing with us all those details. So all arrangements in place by the Election Commission in ensuring free and fair polls in the 6th and the last phase of West Bengal Assembly elections today. Right, that was about East Midnapur. Let's take a roundup of as to how the voters have gathered in Cooch Behar. Ashwini Mishra, our correspondent, is joining us from Cooch Behar. Ashwini, we were talking to Anibrata from Nandigram a while back, and he told us that a number of people have gathered. You were there in Cooch Behar. Tell us, how has the morning begun there? जी प्रीति, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ सुबह 6:30 बजे के पहले से ही इस लाइन से तकरीबन लंबी लाइन लगी हुई थी। 7 बजे जब मतदान शुरू हुआ है तो बड़ी संख्या में लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग मतदान केंद्रों के बाहर थे। ये कूच बिहार के जो
9 सीटों पर मतदान होना है। इन पे काफ़ी ज़बरदस्त उत्साह लोगों के बीच देखा जा रहा है और मतदान का जो औपचारिक आंकड़े आएंगे उससे स्पष्ट होगा कि कितना तेज़ मतदान है। लोगों में काफ़ी उत्साह है। जो एक खासियत इस क्षेत्र की है वो ये भी है कि इन लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा, ये इनक्लेव ड्वेलर्स थे, जो छीट महल का इलाका यहाँ पे कहा जाता है, उस छीट महल के इलाके के ये वो बाशिंदे हैं जो अब पूरी तरह से भारत के नागरिक हैं और पहली बार ये अपने मतदान के अधिकार को सुनिश्चित कर रहे हैं। स्थिति कितनी गंभीर थी कि ये माताजी है, ये भारतीय नहीं थी, ये बेटा जन्म से भारतीय नहीं था, लेकिन ये जो छोटा बच्चा है, ये 6 महीने का, ये जन्मना भारतीय है, ये कहा जा सकता है। बेहद खुशी इनके चेहरे पर देखी जा सकती है। एकदम चिलचिलाती धूप में ही अल सुबह ये लोग निकल आए हैं और साथ ही साथ स्थितियां ये हैं कि इनके पास ऑप्शन था, जो कि अकॉर्ड हुआ, जो समझौता हुआ पिछले जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेगम खालिदा जिया शेख हसीना वाजेद के बीच में, तो इनके बीच जो हुआ ये ऑप्शन था कि ये अपने फिजिकल एक्सचेंज कर सकते थे, बांग्लादेश जा सकते थे, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर चुना और ये अब पूरी तरह से भारतीय नागरिक है। पहली बार आप वोट कर रही हैं, खूब भालो आछे, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले मतलब आप लोगों ने कभी वोट नहीं किया? नहीं, ये पहली बार। आप जिस गांव में थी वहाँ पे बिजली, पढ़ाई लिखाई, दवाई ठीक से करने के लिए बोल रहा हूँ। अभी ठीक है। चाहेंगी क्या चाहूँगी, स्कूल जो बच्चा पढ़ा लिखा सीखे गए तो बिजली, बच्चा पढ़ने से सुविधा हो रहा है, तो पानी, अश्विनी, स्वास्थ्य केंद्र जी साफ तौर से आप देख सकते हैं कि बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी इनको हासिल नहीं थी। बेहिसाब इन्होंने दर्द झेला और आज खुशी में चेहरे का हिजाब भी इनका खुला हुआ है। बेहद खुश हो लोग। जी प्रीति। Yes, Ashwini, you very aptly summed up the satisfaction and the enthusiasm of the residents of these border enclaves in West Bengal. But this is the last and the penultimate phase of polling in West Bengal. You've told us how significant is this polling and this phase socially. But given the fact that this is the last phase of polling in West Bengal, elaborate for us how important is it for the political parties, explaining us the political contest in Cooch, Behar. Ashwini? जी, अगर कूच बिहार के इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर पिछले 2011 के अगर चुनाव की बात करें तो तकरीबन 86% मतदान हुआ था, यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वोटर टर्नआउट यहाँ ज़बरदस्त होगा। तकरीबन 85% मतदान इन सभी 2500 सीटों पर हुआ था, जो कि अपेक्षा करते हैं कि मतदान प्रतिशत ज़्यादा होगा। इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो इन सभी क्षेत्रों में ये सीमा से जुड़े हुए इलाके हैं। इनका ही अगर बात करें, जो एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स हुए हैं, लगभग 7 दशक से इनकी समस्या थी, वो अधर में लटकी हुई थी और वो अब जाके कहीं ना कहीं वो हुई है। ये तकरीबन 15,000 के आसपास आबादी है और तकरीबन इनमें 9 से 10,000 के आसपास वोटर हैं। इनके लिए तो एक आप ये समझिए कि भारत का नागरिक होना और साथ ही साथ गर्व की बात तो है ही, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ अपना एक उज्जवल भविष्य भी दिखता है, जो कि लंबे समय से अधर में लटका हुआ था। इन क्षेत्रों की अगर बात करें तो बहुत सारे अन्य मुद्दे भी हैं, जैसे ग्रेटर कूच बिहार अलग राज्य बनाए जाने की मांग यहाँ का ग्रेटर कूच बिहार पीपुल्स एसोसिएशन करती है। एक कामतापुरी यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, उसको सब संविधान के शेड्यूल लैंग्वेज कहने की बात करते हैं। बुनियादी सुविधाओं में कुछ इजाफा हुआ, लेकिन और ज्यादा बेहतरी सब चाहते हैं। All right, Ashwini Mishra, thank you for joining us with that detailed analysis. We'll come back to you again during the day to get a sense of